So we're going to start with polarization and scattering. ठीक है, scattering you have to later study also independently in the fourth unit. But since we are doing spin, so we have the relationship of how polarization and scattering, just like collisions are there. So normal अगर elastic collision या elastic collision होता है, two particles they will collide with each other. But since हमारा जो we are this time interested in the property of spin या spin angular momentum, ठीक है, which may be due to magnetic moment या जो भी जिसकी वजह से वो spin होता है, and angular momentum operators represented by in quantum mechanics momentum angular momentum operators. तो जो collision या scattering होगी incoming, so you have to take into account the intrinsic spin of the incoming particle, which will collide or which will scatter. ठीक है, तो normally so you have to take the spin component into consideration. So that's the thing, polarization and scattering. Polarization we already know, either to spin up या down या plus half या minus half या plus 3/2 5/2, so on and that you know. What is the eigenstate का angular momentum eigenstate का eigenvalue क्या, what it will take, depends. ठीक है, either it can be up or it can be down, that's it. अब क्वेश्चन ये है कि अब अगर हमारे पास कोई beam of particles है, which is beam of particles and which is basically spin dependent. क्या है? Spin dependent. So we have to account for a spin factor while something is going to get scattered in the process. तो हम spin dependence को कैसे करेंगे? For example, incident particles अगर उनका spin 1/2 है, तो वेव फंक्शन जो है e⁻kz का इनकमिंग, तो इसकी e⁻kz आपने पोलराइज ये पढ़ी है, बॉर्न अप्रोक्सीमेशन, अप्रोक्सीमेशन पढ़ा है इन क्वांटम मैकेनिक्स. तो लीव इट. सो विल से द इनकमिंग पार्टिकल्स जो है उनका ये पोलराइजेशन ऐसे होगा. दो ये एक्सपोनेंशियल ऑफ दिस फंक्शन दिस का इसकी जो पोलराइजेशन C1 C2 होगी, such that जो टोटल स्कैटरिंग मैट्रिक्स होगा इंसिडेंट, it will come out to be 1. So which will be sort of conservations of the system also, and the total energy of the system is conserved also. So for this thing, so अब हमारे पास जो asymptotic solution of Schrödinger equation होगा, asymptotic solution of Schrödinger equation means we have incoming plus f theta phi e⁻iota kr. So we'll have the scattering component and the incoming component, है ना, which may be spin dependent. जैसे कोई particle आ रहा है, so normally elastic collisions or collision will scatter, things will scatter. हम फिर total cross section देखते हैं, incoming is equal to outgoing, है ना, k1 plus k2 is equal to k3 plus k4, ऐसा कुछ करते हैं, है ना, या but some k1 plus k2 plus k3 plus is equal to constant, है ना. But यहाँ incoming particle है, but it is a scattering spin dependent component. What is my point? Scattering spin dependent component, that we have to take into account, and which may depend upon coordinates theta phi. अब ये है ना, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम है ना ऐसे, so we have taken angular momentum operator L इसकी आइगन स्टेट्स L square so on and so, and उसके फिर आइगन वैल्यूज निकालते हैं, and which are given by, if you have studied Legendre polynomials, P in the form of Pn निकालते हैं वहाँ,
उसी के solutions आते हैं L into L plus 1 in the earlier courses of quantum. We are not going to do that. So we have to take those components into consideration while, तो अब ये spin dependent component जो हमारे पास है, spin dependent scattering of particles, for example Hamiltonian, total Hamiltonian या total energy of the system क्या आएगी? एक तो इसकी काइनेटिक एनर्जी आएगी, द अदर इज पोटेंशियल एनर्जी आएगी, प्लस दिस स्पिन डिपेंडेंट कंपोनेंट विच विल राइट लाइक दिस W और L डॉट सिग्मा, ठीक है. सो विच में बी स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन in addition to a central force. So central force में नॉर्मल ये दो कंपोनेंट्स हैं ना, टोटल एनर्जी, बट वी हैव स्पिन ऑर्बिट कपलिंग भी है, ठीक है. समटाइम्स इट इज रिटन बाय J, समटाइम्स J into J+1 अगर मैग्नेटिक कंपोनेंट है. सो वी हैव टू इनकॉर्पोरेट दिस. अब इसमें भी जो अब काय है, काय यहाँ पर काय, इसमें भी है ना, इसकी दो ओरिएंटेशन, स्पिन अप भी हो सकता है, तो काय इनकमिंग को हम लिखेंगे एज अल्फा, इस दूसरे को काय को हम लिखेंगे द स्कैटरिंग कंपोनेंट्स को, दो कंपोनेंट्स जो आएंगे, एक तो अल्फा के साथ रिप्रेजेंट करेंगे, एक बीटा के साथ रिप्रेजेंट करेंगे. तो वंस यू डू इट, जो हमारे पास साई होगी, साई in terms of psi, we are going to write in terms of so psi will be equivalent to, it will be equivalent to approximately, एक तो अपना iota kz प्लस अब जो स्कैटरिंग मैट्रिक्स है हमारे पास, उसके कंपोनेंट्स है ना 2x2 मैट्रिक्स आएंगे, क्योंकि हमारे पास है ना पॉलीस्पिन मैट्रिसेस. आप उसकी पोलराइजेशन सी सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, सिग्मा जेड, एनी ऑफ द ओरिएंटेशन कैन बी देयर. सो दे कैन बी, अगर 2x2 मैट्रिसेस है, इसके एलिमेंट्स क्या आएंगे? A10, A11, A20, A11, A10, A22, ऐसा कुछ आएगी ना. सो वी हैव टू सी द साल, तो ये अपना आएगी इनकमिंग वेव प्लस S11 प्लस S12 बीटा एक्टिंग अपॉन K और बाय R. ये एक वेव आएगी, इसको हम psi1 लिखेंगे, एंड psi2 आएगा अप्रोक्सीमेटली इन द सेंस दैट इट डज नॉट परफेक्ट इलास्टिक स्कैटरिंग, जिसका हम कहते हैं. Some amount of energy is dissipated, we cannot account for. So that's why it's approximate. So it's e to the power iota kz plus, तो ये क्या आएगा शाबाश? It will be S21 plus S22 beta e to the power iota e dot r by r. So the quantity in the parenthesis is the appropriate, हाँ ठीक है. Now if they are the states, basically they are the states जो हमारे पास है ना, ये elements, ये है ना A1, A10, A11, A121, A2 या A11 लिखिए, A10, A11, हाँ ठीक है. तो ये है हमारे एलिमेंट्स. ये कल हमने जो स्कैटरिंग मैट्रिक्स है ना, as an operator, this is basically operator, it acts on that state, उसी में निकालता हम S dagger S is equal to 1. अब इसके दो कंपोनेंट्स है, ऊपर वाले दो कंपोनेंट्स ये हैं, नीचे वाले दो कंपोनेंट्स ये हैं S21. एक तो इनकमिंग स्टेट का एक ये है प्लस दिस वन, एंड सेकंड के लिए ये है, ये S21 S22 sort of operator. Now if you go to the book exercise 16.24, अभी क्या है कि show that
incident wave e to the power iota alpha kz alpha and e to the iota kz beta are eigenstates of gz. ठीक है, हमको ये दिखाने दिया था eigenstates of jz is angular momentum operator. तो अब क्वांटम मैकेनिक्स में क्या काम निकालना होता है? बेसिकली व्हाट्स द एम? वी हैव टू फाइंड इट्स आइगन वैल्यूज. फाइंड द व्हाट आर द आइगन वैल्यूज. तो हमारे पास पता है ऑपरेटर हमारा है एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर एल और एल एल, बट इट्स गोइंग टू एक्ट ऑन सम स्टेट साई. बट जो स्टेट साई है वो आइगन सिग्नल्स, ठीक है, ऑफ दोज एंगुलर मोमेंटम जो भी है उनके हमारे आइगन वैल्यूज निकालनी. अब जो हमारे पास अगर इंसिडेंट वेव ये है एंड दिस एंड दिस और द आइगन स्टेट्स, ये दो स्टेट्स हमारे पास है. एक आइगन स्टेट ये है, दूसरी आइगन स्टेट ये है. और आइगन स्टेट्स ऑफ दिस इज द ऑपरेटर. दिस ऑपरेटर इज गोइंग टू एक्ट ऑन दीज टू आइगन स्टेट्स, जिसकी ये अल्फा है ये बीटा है. तो वी हैव टू फाइंड आइगन वैल्यू. तो नॉर्मली आइगन वैल्यू प्रॉब्लम वही है ना, जैसे a1 2 माइनस लैम्डा इंटू आई इज इक्वल टू 0, वहां से निकालते हैं ना. So we have to solve eigenvalue problem for this spin angular momentum operators for particular states like this and this. यहाँ तक clear है ना? And the analogy is that of incoming scattering wave which is spin dependent, which is spin dependent. तो अब हम क्या करेंगे काम? What we are going to do? So, अगर if we just represent इसका नंबरिंग बुक की है 117, चलो 117 and 18. So multiplying this by C1, इसको C1 के साथ मल्टीप्लाई करो, इसको C1 C2 के साथ मल्टीप्लाई करो, and adding the two equations, they will be e to the power iota kz C1 C2 प्लस ये है ना, ये इसको ये दो मैट्रिसेस है ना, तो ये एक ही मैट्रिक्स बनेगा. हमने बेसिकली पिछले वाले में दो कंपोनेंट्स अलग लिए. ये ऊपर वाला कंपोनेंट ये था एंड नीचे वाला कंपोनेंट. नाउ वी आर गोइंग टू ऐड देम, सिंपली ऐड देम. तो इट विल बिकम वन मैट्रिक्स S11 S12 S21 S22. It's a sort of matrices acting on these polarized states. So they will give us जो combined wave हमारे पास है, एक अपनी e to the power iota k z plus e to the power iota k or S is the matrix, chi is the incoming state, and S stands for incoming matrix S11 S12 S21 S22. And S is also dependent upon, S is theta and phi dependent. Basically S is an operator. Operator की states होती है, operator matrix for not always, but you can have matrix dependence of operators. Operators acting on state psi, which will give for chirality, which will give different eigen values. ठीक है? So अब ये है कि थोड़ा सा you have to go to proper scattering theory to see the exact incoming wave and scattering wave का total contribution क्या आएगा. ठीक है? So for that we are going to here take an approximate methodology. ठीक है? Not a proper course to scattering theory. हाँ, just see it. Not a proper course to scattering theory by उसका partial analysis क्या है. तो
and we are going to use some symmetry arguments to justify it or to come out to something. Symmetry argument क्या है? So we are assuming that there is a spherical symmetry. अब इट्स नॉट नेसेसरी कि जो सिमेट्री होगी ना उसमें अगर स्फेरिकल सिमेट्री नहीं होगी तो हमारे पास एक ही पैरामीटर है आर डिपेंडेंट, है ना, इट विल बी आर विल बी कांस्टेंट. अगर स्फेरिकल सिमेट्री नहीं होगी तो दैट्स एन अप्रोक्सीमेशन. सो वी कैन डू दैट कॉम्प्लिकेटेड एनालिसिस आल्सो, ठीक है, वेयर इट मे नॉट बी एंटायरली सिमेट्रिक एंड अदर थिंग्स. सो एंड विच इज इनवेरिएंट under rotations. तो इंसिडेंट वेव जो हमारे पास है यहां पर, इंसिडेंट वेव और आइगन स्टेट्स, इंसिडेंट वेव और आइगन स्टेट्स ऑफ जेजेड विद आइगन वैल्यूज plus h by 2 and minus h by 2 respectively. Since the operator जो jz है it will leave radial, जो भी मैं कह रहा था, radial dependence of scattered wave unchanged. रेडियल, आप समझिए, इट विल लीव द रेडियल डिपेंडेंस ऑफ स्कैटर्ड वेव. नॉर्मली जब कोई चीज कोलाइड करती है ना, स्फेरिकल वेव फ्रंट कोलाइड करेगी, आफ्टर कोलिजन इट विल नॉट रिमेन स्फेरिकल वेव फ्रंट, इसकी कोई और शेप हो सकती है. बट फॉर अप्रोक्सीमेट रीजंस हम मानते हैं ये इवन इट विल बी स्फेरिकल, स्फेरिकल ही रहेगा, उतना ज्यादा फर्क. तभी हमारा जो जेजेड है, ऑपरेटर जो जेजेड है, उसका रेडियल डिपेंडेंस ऑफ स्कैटर्ड वेव रिमेन्स unchanged. So if it is that way, we have so we can write जो jz operator acting on psi y and jz operator acting on psi 2. It can have the form psi 1 is equal to so its angular momentum operator को हम ऐसे लिखते हैं, h by iota बेसिकली आता है यहाँ पर. सो हमने आयोटा को अंदर लिया फॉर रीजंस ऑफ थोड़ा सिंप्लिसिटी. तो एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर आप देखना कैसे लिखते हैं, ठीक है, या कैसे कैलकुलेट करते हैं. सो हियर वी अब यहाँ पर ये तो ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, जे जेड एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर एक्टिंग ऑन स्टेट साई, ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है. नाउ वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस द स्पिन डिपेंडेंट कंपोनेंट विच इज इन टर्न डिपेंडेंट अपॉन पोलराइजेशन. क्या है स्पिन डिपेंडेंट कंपोनेंट? इज प्लस 1/2 सिग्मा जेड इंटू साई 1. तो अगर एक्स वाई प्लेन में वेव है तो इट्स बी जेड एक्टिंग ऑन साई. सो इसका ये हम इसको हम डिनोट करेंगे h/2 साई 1 के साथ. अब जो जे जेड एक्टिंग ऑन साई 2, इसकी पोलराइजेशन थोड़ी सी, it is again d/d phi. So again it will be sigma z into, so इसकी पोलराइजेशन आएगी थोड़ा सा, it will be माइनस. क्यों माइनस है ना, इनकमिंग स्कैटरिंग, ठीक है, वो वापस डायरेक्शन में आएगा ना कि नहीं, समथिंग इज गोइंग टू कोलाइड, सो दैट्स व्हाई यू कैन टेक इट माइनस. So the spin dependent factor is taken here into consideration. अब हम what we are going to do? So you can write S11 जो हमारे पास अब इसमें diagonal elements हैं ना, they are same, they are sort of thing. So you can say now ये कंपोनेंट्स हमको मोर और लेस निकालनी पड़ेगी. सो वी कैन राइट
So S11 and S22 are the functions of theta only. And off diagonal scattering elements जो होंगे off diagonal elements S12 and S2, तो we can write them as S12 को हम in terms of लिखेंगे e to the power minus iota phi into function of theta, और S21 को हम लिखेंगे e to the power iota phi into function of theta. तो यू कैन हैव प्लस माइनस जो आएगा ना, यहाँ माइनस पाई आएगा, ये फाई आएगा. जब आप इसको आप इनवर्स ऑफ दिस निकालेंगे, यहाँ से एक प्लस आएगा, ये एलिमेंट माइनस आएगा. सो फर्दर जो हैमिल्टोनियन है, इट्स assumed to be invariant under the reflection with respect to so coordinate space. वही मैं कह रहा था. We are taking जो अगर रिफ्लेक्शन हो psi of x और psi of minus x is same, या रोटेशनल ऑपरेटर j z और j of minus z, वो it doesn't change the value of eigenvalue, या it doesn't change, it can flip the thing. So spin orbit जो इंटरेक्शन है for both L is angular momentum, S is spin angular momentum, और sigma की different orientations हैं. They are axial vector operators. They are axial vector operators. किसको कहते हैं, है ना? एक्शियल वेक्टर आपने पढ़ा है वेक्टर एनालिसिस में. आप एक हो गया ना नॉर्मल वेक्टर, फिर हम पढ़ते हैं ना एंगुलर मोमेंटम में एक्शियल वेक्टर पढ़ते हैं और क्रॉस एल. ठीक है. सो सिंस इट्स रोटेशनल एंगुलर मोमेंटम या स्पिन एंगुलर मोमेंटम, दोनों का कॉम्बिनेशन, तो समटाइम्स इट्स एल प्लस माइनस एस, है ना, ऐसी जी. सो एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर को हम इन टर्म्स ऑफ एल प्लस माइनस एस लिखेंगे. सो दैट्स वाई एंड फर्दर वी हैव आल्सो इंक्लूडेड हियर जो हमारे पास कायरलिटी आ रही है ना, ये इसको क्या कहते हैं, स्पिनर, आइगन वेक्टर और आइगन स्पिनर्स, उसको सिग्मा भी इसमें आता है, सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, सिग्मा जेड. ठीक है. सो दिस इज एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर्स एक्टिंग ऑन दीज टू स्टेट्स. सो फॉर सिंप्लिसिटी हम जो ये है एलिमेंट्स डिपेंड्स ऑन थीटा ओनली, एंड वी आर टेकिंग दिस ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स. अब हम करेंगे अगेन व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज again we are going to do for more general explanations of reflections and parity of the systems of spin. If you remember, जब आप निकालते हैं ना लीजेंडर सॉल्यूशन, आप निकालते हैं एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर्स, इसी बुक में आप देखते हैं या एनी अदर बुक, हाउ फाइंड द आइगन वैल्यूज ऑफ एल एंड एल स्क्वायर. दिस इज एक्सरसाइज, पर्टिकुलर एक्सरसाइज फॉर दीज टू स्टेट्स. तो वहां जब हम पी के वैल्यू लेते हैं ना, ऑड एंड इवन, ठीक है, it will satisfy for a particular combination of L into L plus 1. Just see it here. So the way we do there as an approximation, in the same sense, जो reflections of तो वहाँ I remember now, वहाँ हम लेते हैं फिर वो आइसोस्पिन के लिए इंटीग्रल और इंटीग्रल वैल्यू, जो नॉर्मली वैल्यू आती है ना ऐसे, जैसे E कुछ एक्टिंग ऑन साई इज इक्वल टू n + 1/2 into h ओमेगा कुछ.
For 0 आएगा ये 1/2 h ओमेगा 3/2 5/2 so on it. मगर जो आइगन वैल्यूज प्रॉब्लम आती है ना फॉर एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर, it comes out to be integer values only. So I am digressing this from bit, leave it. तो अब मेरा कहने का मतलब है कि जिस तरह वहां आप अप्रोक्सीमेशन करते हैं ना, यहाँ we are also doing approximation, we are having reflection, जो parity of the systems. तो वहां हमने कहा था कि ऐसे सिस्टम के लिए वो सॉल्यूशन है. So here we can take is beta, sigma x, beta is alpha. So we can take this symmetry function. So if you have this particular combination of polyspin matrices, यहाँ है ना symmetry, reflection symmetry. आप अल्फा को बीटा कैसे चेंज करो, बीटा को it doesn't matter. So in that sense it means कि अगर reflect करोगे कोई coordinate, so it should not change the final analysis. अब यहाँ से करो या प्लस माइनस से फर्क नहीं पड़ेगा. So in that sense, so if we have one matrix, matrix कौन सा था हमारे पास? S 1 1 1 2 1 2. So what we are going to say is जो हमारे पास coordinates हैं S1 S2, तो ये थीटा डिपेंडेंट, we have some order constants. और जो odd of diagonal elements हैं theta and phi dependent. So if you flip theta by phi, so it will be S1 phi जो ये हो गया रिफ्लेक्शन सिमेट्री. if theta change करो यहाँ phi को minus phi के साथ करो यहाँ minus आ जाएगा. So in a sense this and this elements, this is basically an operator, ठीक है, angular momentum operator which is acting on side and that is spin dependent, ठीक है, which has sigma also. अब ये angular momentum operator को हमने further simplify किया है क्योंकि ये है ना रोटेशनल मोमेंटम, इसका थीटा डिपेंडेंस भी है, फाई डिपेंडेंस भी है. तो थीटा एंड फाई डिपेंडेंस ये हमने कांस्टेंट रखा है दो एलिमेंट्स ऑपरेटर. इन दो एलिमेंट्स को हम कहते हैं कि आर सिमेट्री डिपेंडेंट. यू कैन हैव रिफ्लेक्शन सिमेट्री फाई, ठीक है, सिंपलीफाई और इट्स लेटर इक्विवेलेंट. Now consequently we might have. So if you again जो कल हमने किया था exercise हमने की थी, we will introduce again this thing. So I'll write it. So we can write it, any matrix as an identity matrix plus polyspin matrix. ये हमने identity वो identity use करते हुए and these simplifications that phi and theta को हमने थोड़ा simplify किया by this reflection symmetry and this thing. तो you can write जो s हमारे पास है ये g theta यहाँ पे लिखो, इसके बदले आप लिखो h theta equal minus root of phi. ये लिखो minus h theta equal root of phi and g theta. So you can write these matrices as identity matrices plus 3 polyspin matrices. तो कल हमने पढ़ा sigma is equal to I identity matrix plus sigma x plus sigma y sigma. Using that identity we can write it like this. G theta plus omega h, आप देखते हो h है h ये है ना इक्वल माइनस iota phi इक्वल माइनस iota phi. ये अगर cos phi प्लस iota sin phi, ये अगर cos phi माइनस iota sin phi. इन द फाइनल एनालिसिस sin phi कैंसिल हो जाएगा, यहाँ प्लस आएगा माइनस आएगा, तो क्या बचेगा सिग्मा x cos phi minus sigma x sin phi. So in the final analysis,
where unit vector n sin phi cos phi is usually plane. This may use scattering wave. So we have an incoming scattering wave which has spin dependent component. क्योंकि x y plane है तो zero होगा. That's it. Which is normal to plane of scattering and points in the direction k incoming cross of this scattering. इसको final matrix को हम ऐसे लिखते हैं. S is equal to where S is equal to G theta I plus I will n dot C. N dot C. We have to make this substitution. If it's sorry, यहाँ ये y component है, यहाँ x component. That's why then we can see the component is given the So this is the generalization of spin of Pearson's scattering theorem. There is one exercise here which says that show that the same scattering matrix is obtained by finding reflection symmetry with respect to exactly. Same scattering matrix is obtained. जो स्कैटरिंग मैट्रिक्स हमने यहाँ पर ऑब्टेन किया है यह वही आएगा बट प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन चेंज करो जैसे एक्स वाई है ना तो कंपोनेंट आएगा है ना जैसे एक्स पी एक्स माइनस पी एक्स क्या आएगा ये जीरो आता है ना बट इन क्वांटम मैकेनिक्स एक्स py minus py x ये आएगा शायद नहीं जाता है ना ज़्यादा डायरेक्शन आएगा नहीं commutative operators will be zero non-angular commutative operator so जो दो components में होगा तो इसका होगा in that direction so in the same way अभी कह रहा है कि हम वही कह रहा है अब स्कैटरिंग मैट्रिक्स जो हमारे पास है S A11 A12 A21 A22 which is also external operator ये कह रहा ऑपरेटर वही रहेगा even though you have changed the symmetry of reflection ठीक है फर्क नहीं पड़ेगा अब इसमें हम थोड़ा सा we are going to use a scattering formula जिसकी once we come to the जो हमारा next है scattering we are going to look in detail here I only use a formula which you might have also studied in classical mechanics. Scattering कैसे करते हैं? D sigma by है ना? इसी इक्वल टू यहाँ पर क्या है? S by or you can write it guys diagram S ठीक है और इसको हम how can write it so D sigma by D rho can be written as trace of rho in terms S diagram S S is the density matrix जो हम कल किया so जो scattering है scattering is basically what remains at the end है ना so incoming particles आते हैं they are colliding and we are getting something else so जिस तरह हम कहते हैं ना before collision M1 plus M2 is equal to M1 plus but here जो incoming scattering matrix है तो उसमें they are going to operate by they are going to get mediated through some scattering matrix. Okay, those scattering matrix may be this
such that S greater S is 1. Okay, and these are the polarizations. Now, it's an exercise of the rules that we do. If you want to write it in terms of scatter matrix, you can write it as S rho S or S rho and rho is one plus S. Rho is one plus inverse. So here I forgot to say. ये है ना ये वाली property, one plus reversing. It's here. So any this matrix can be written as identity matrix plus there is a step पहले identity matrix plus this P dot C. ठीक है? So let me summarize. हमने क्या किया? हमने incoming scattering, incoming wave which is spin dependent. देखो क्या नॉर्मल कोलिजन स्पिन डिपेंडेंट पोलराइजेशन, ठीक है, उसका कोलिजन हमने स्टडी किया इन सम अप्रोक्सीमेट एनालिसिस। अप्रोक्सीमेशन क्या है? हमने जो रेडियल कंपोनेंट है जैसे स्फेरिकल वेव फ्रंट है, इट विल कम, इट विल कोलाइड, आफ्टर कोलिजन वो स्फेरिकल नहीं रहेगा, यू अज्यूम दैट इट विल ऑल बी स्फेरिकली एंड ऑपरेटर्स कौन से हैं? एंगुलर मोमेंटम जे स्क्वायर है ना, or J can be sometimes L dependent also and spin dependent also. Okay, so you can just stop. Yes, sir.